हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल एक जिंदगी एकेडमी में। तो आज हम इंडियन पॉलिटी को रिवाइज करेंगे। बीपीएससी प्रीलिम्स जो बीपीएससी 66 प्रीलिम्स हम देने जा रहे हैं, उसके लिए हम रिवीजन कर रहे हैं। तो और हमारे पास 15 दिन बचे हुए हैं। तो जैसा कि हमने कहा था कल कि कल हम साइंस एंड टेक कर रहे थे और आज हम पॉलिटी करेंगे। तो मेरे साथ जो भी रिवीजन करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज हम इंडियन पॉलिटी को जितना भी सब सेक्शन है उसमें से जितना भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो सभी एमसीक्यू को हम देखेंगे। हम जल्द से ही जल्द रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो हम 25 मिनट का टाइमर सेट करेंगे और 25 मिनट में हम कितना सेक्शन कर पाते हैं और उसके अंदर हम कितना क्वेश्चन कर पाते हैं 25 मिनट के अंदर रिवीजन, उसे हमें देखना है। और वो हमें रिड्यूस करना है कि कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को याद कर पाएँ, पढ़ पाएँ। तो ये पहला रिवीजन है, ये ट्रायल है। अभी और 2 से 3 रिवीजन करूँगा अगर समय मिला तो हमें बेहतर होना है। इस रिवीजन में ट्रायल है जो हमारा स्ट्रेटेजी है, और जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ जो रिवीजन होगा, पॉसिबल होगा फोर्थ तो फोर्थ भी किया जाएगा। तो फोर्थ तक हमें मास्टर बन जाना है अपनी स्ट्रेटेजी में, और तभी हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आज इंडियन पॉलिटी दिन भर चलेगा, इंडियन पॉलिटी को ही हम लोग आज देखेंगे। तो लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव का इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है, वहाँ से हम एमसीक्यू को कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो फैक्चुअल बेस्ड एमसीक्यू आते हैं, तो लूसेंट हम बोल सकते हैं कि एक बेस मजबूत कर देगा। तो लूसेंट से करने से जो भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं इंडियन पॉलिटी आज शुरुआत। देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस टाइप के एमसीक्यू आखिरकार हम हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो किसका एक इन्फ्लुएंस था जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है। तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सेकंड क्वेश्चन है कि द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव एंड अ पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू। कौन सा एक्ट है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था रिप्रेजेंट करने के लिए, जो पॉपुलर एलिमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भारत में ब्रिटिश के द्वारा, वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। तो कौन सा एक्ट था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था, जिसके तहत कम्युनल इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया था। कम्युनल इलेक्टोरेट क्या है? आपको पता होगा कि हिंदू हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम मुस्लिम को ही वोट दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ट्रांसफर्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्टर्न इंडिया कंपनी टू द क्राउन। असर्शन है, रीजन क्या है? द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अनविलिंग टू एडमिनिस्टर इंडिया एनीमोर। तो रीजन गलत है और असर्शन जो है वो सही है। तो इसका आंसर सी होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो डायरकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल जो हुआ था वो किस इंडिया एक्ट के तहत हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। नेक्स्ट है कि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन coined in the Government of India Act 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as। कौन सा इमरजेंसी प्रोविजन के लिए हुआ था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंटेन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसे कंस्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया में 1950 में इमरजेंसी प्रोविजन के तहत लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो जो बेस्ड है वो किस चीज पे है? तो वो प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। नेक्स्ट जो है कि मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबॉलिश्ड बाय
चार्टर एक्ट 1813, जो ईस्ट इंडिया जो पहले आई थी वो मोनोपोली उनका था ट्रेड में, तो वो अबोलिश कर दिया गया चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग एक्ट्स। रेगुलेटिंग एक्ट, बिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, तो पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया है, बिट्स इंडिया एक्ट सेकंड में आया, चार्टर एक्ट थर्ड में आया, इंडियन काउंसिल एक्ट फोर्थ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोंटेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 वाज, क्या था आखिरकार मोंटेग-चेम्सफोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव। तो 2 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो दो था, टू एस्टेब्लिश डायरकी इन द प्रोविंसेस, द एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो डायरकी हमने पढ़ा अभी कि डायरकी कब आया था, डायरकी 1919 में आया था। तो मोंटेग जो चेम्सफोर्ड थे वो 1919 में उनके शासन के दौरान आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका विच ऑफ करेक्ट आंसर है 11 का, which of these were embodied in the Government of India Act 1935? तो establishment of an all Indian federation, provincial autonomy with a government responsible to an elected legislature। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया, द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एंडेड बाय। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ये पहले ही हमने देख चुके हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ मॉर्ले-मेंटो रिफॉर्म एक्ट इन द कॉलोनियल इंडिया। तो मॉर्ले-मेंटो रिफॉर्म से रिलेटेड क्या है कॉलोनियल इंडिया में। तो इसका 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखते हैं स्टेटमेंट। द मॉर्ले-मेंटो रिफॉर्म एक्ट रेज द नंबर ऑफ एडिशनल नंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेकंड है इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। थर्ड है कि इट empowered the legislation to discuss the budget and to move resolution on it। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय। तो सिमिलर कॉन्फ्रेंस, क्रिप्स प्रपोजल, कैबिनेट मिशन प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion और रीजन दिया हुआ है। The Government of India Act 1919 was passed by British Parliament to introduce diarchy in the provincial government। Second है Montagu-Chelmsford Reform Committee has recommended the introduction of diarchy in provincial government। तो both A and R are true। मीन्स assertion और रीजन दोनों सही है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा वो इंट्रोड्यूस करने के लिए डायरकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, और जो मोंटेगी-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो कमेटी जो रिकमेंड किया इंट्रोडक्शन डायरकी का प्रोविंशियल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑर्डर टू। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तीनों स्टेटमेंट देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से रिलेटेड एस्टैब्लिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, मेक द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड ऑफ डबल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो इसका सही उत्तर तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन बाय। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ये लिया गया था। फर्स्ट डेफिनेटिव स्टेप प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट है द मोंटेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म फॉर्म द बेसिस ऑफ कौन सा एक्ट, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, या फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मोंटेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म फॉर्म द बेसिस ऑफ। फिर से सेक्शन और रीजन का क्वेश्चन आ गया, देखते हैं। The Government of India Act 1935 and the Constitution of India are both lengthy documents। Second, जो region the Government of India Act 1935 was taken as a model and substantially incorporated in the Constitution of India। तो ये both and are true and are is the correct explanation of A means section का। Next question है through which one of the following were commercial activities of the East India Company finally put to an end। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल एक्टिविटीज था उसे एंड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्टेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विद सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंट्रोल ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया विद द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ये हुआ था। हायरार्की वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस अंडर मोंटफोर्ड रिफॉर्म, मोंटेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये तो हमने पहले देखा 1919 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द मेन फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर,
evolution, expansion and reconstitution of central and provincial legislature. Next question. In the Federation under the Act of 1935 residuary power were given to the Governor General. 1935 में हुआ क्या था कि residuary power गवर्नर जनरल को सारा दे दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंडियन लेजिस्लेचर जो मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो किस इंडियन एक्ट में हुआ था जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया था, मींस लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बनाया गया था बाई कैमरल लेजिस्लेचर. मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 मींस कौन सा एक्ट में कौन 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 से गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय हुआ करते थे. तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 मॉन्टेगी चैलेंज फॉर रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड जॉइंट सेलेक्ट कमिटी रिकमेंडेशन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 माउंटबेटन प्लान. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो चार स्टेटमेंट दिए गए हैं तो देखते हैं. द नेहरू रिपोर्ट 1920 हैज advocated the inclusion of fundamental rights in the Constitution of India. Second, the Government of India Act 1935 referred to the fundamental rights. Third, the August Offer 1940 included the fundamental rights. Fourth, the Cripps Mission 1942 referred to the fundamental rights. तो 27 का ये नेहरू रिपोर्ट वाला सही होगा. नेक्स्ट है which of the following act was described by the Jawaharlal Nehru as Charter of Slavery. The Government of India Act 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था. इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 1950 में. विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरेक्टली एट द सेंटर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 which was not a member of cabinet mission John Simon. Which of the following was the biggest source of Constitution of India. Government of India Act 1935. The Constitution of India came into force on 26 January 1950. Which of the following are the principal features of the Government of India Act 1919? Introduction of diarchy in the executive government of the provinces, devolution of legislative authority by the centre to the provinces. The distribution of power between the centre and the state in Indian Constitution is based on the scheme provided in the Government of India Act 1935. Supreme Court of India was set up by the Regulating Act 1773. ये तमिलनाडु पीसीएस में प्रीलिम्स में आ चुका है. हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में. तो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. पंडित जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन हुआ करते थे जो भी कमिटी था कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द बेसिक फॉर कंस्टिट्यूटिंग द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. कैबिनेट मिशन प्लान 1946. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सच्चिदानंद सिन्हा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. पी.एन. राव. ड्राफ्टिंग कमिटी एडवाइजर. The Constituent Assembly of India started functioning from 9th December 1946. Constituent Assembly of India started functioning from 9th December 1946. How much time the Constituent Assembly took to frame the Constitution of India? 2 years 11 months 18 days. 2 years 11 months 18 days. The first day session of Indian Constituent Assembly was chaired by Dr. Sachchidanand Sinha. How many sessions of the Indian Constituent Assembly were conducted for the formulation of Indian Constitution? 11. How many sessions of the Indian Constituent Assembly were conducted for the formulation of Indian Constitution? 11. The Constitution of India was completed on 26 January 1949. Who among the following was not a member of the Constituent Assembly? J.P. Jayaprakash Narayan, K.M. Munshi था, आचार्य J.P. कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब थे. जयप्रकाश नारायण नहीं थे. Who among the Next question, who among the following had moved the objective resolution which formed the basis of the preamble of the Constitution of India in the Constituent Assembly on December 13, 1946? जवाहरलाल नेहरू. ये देख सकते हैं आप यूपी बिजनेसमैन में आ चुका है क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द Constituent Assembly set up
drafting a committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar on 29th August 1947. The Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar on 29th August 1947. Who was the chairman of the Provisional Constitution Committee of the Constituent Assembly? Sardar Patel, chairman of the Provincial Constitution Committee of the Constituent Assembly. The number of members included in the Constitution Drafting Committee was 7. Number of members included in the Constitution Drafting Committee was 7. The first session of the Constitution Assembly was held on 9 December 1946. First session of the Constitutional Assembly was held on 9 December 1946. Who proposed the preamble before the Drafting Committee of the Constitution? Jawaharlal Nehru. Who was the President of the Constitutional Assembly of Independent India? Dr. Rajendra Pratap. Who was the President of the Constituent Assembly of Independent India? Dr. Rajendra Pratap. Who among the following was the Chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? Jawaharlal Nehru. Who among the following was the Chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? Jawaharlal Nehru. How many members were initially there in the Constituent Assembly of India? 300. During which of the following periods did Constituent Assembly deliberate upon and finalize the Constitution of India? December 1946 to December 1949. Assembly Constitution and delivered the final Constitution of India. 2 year, 11 month, 18 days they have taken. Next question. Who among the following was the chairperson of the drafting committee set up by the Constituent Assembly? Dr. B.R. Ambedkar. Members of the Constituent Assembly were elected by provincial assemblies. Next question है deferment of adult franchise for 15 years was advocated in Constituent Assembly by मौलाना आजाद. चलिए अब साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं. The presidential government operate on the principle of separation of power. मैच करना है forms of government और principle. तो presidential system, separation of power, parliamentary system, close relations between executive and legislature, federal system, division of power, unitary system, concentration of power. तो presidential, parliamentary, federal, unitary, चार form of government. Next, English crown is an example of nominal executive. The declaration that democracy is the government of the people, by the people, for the people was made by the Abraham Lincoln. What is the Gandhi's definition of Ram Raj? Sovereignty of the people based on pure moral authority. The most essential feature of the parliamentary form of government is the independent judiciary. Statement 1, Statement 2. The Constitution of India is a liberal constitution. It provides fundamental rights to individual. Both the statements are individually true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. At which of its session did the Congress officially accept the socialist pattern of society? Awadi session of 1955. Congress officially accept the socialist pattern of society. In Indian polity, which one is the supreme? The Constitution. In Indian polity, the executive is subordinate to the legislature. Which of the following statements about the federal system in India are correct? The Constitution introduces a federal system as a basic structure of government. There is a strong admixture of unitary bias. The Constitution of India is partially rigid, partially flexible. Who called Indian federalism as the cooperative federalism? G. Austin. Where was the first parliamentary form of government formed? Britain. Where was the concept of written constitution first for USA? The cardinal features of political system in India was The cardinal features of political system in India are: it is a democratic republic, it has a parliamentary form of government, the supreme power vests in the people of India. Cardinal feature of political system: democratic republic, parliamentary form of government, supreme power vests in the people of India. Which one of the following is a basic feature of the presidential government? Single executive. Which of the following official document is related with India? White paper.
Assertion reason. Indian constitution is a quasi-federal. Indian constitution is neither federal nor unitary. A is true but R is false. Means quasi-federal is correct. Who among the following gave the following statement about Indian constitution? Indian constitution strikes a good balance between extreme rigidity and too much flexibility. Alexander Roach. Which of the following countries enjoy a federal form of government? USA. The unitary system of government poses which of the following advantages? Strong state. The unitary system of government poses which of the following advantages? Strong state. The basis feature of the Indian Constitution which are not amendable under Article 368 are sovereignty, territorial integrity, federal system, judicial review and parliamentary system of government. Which of the following countries have an unwritten constitution? UK. Next we will discuss about the sources of the constitution. So first question is the concept of judicial review in our constitution has been taken from the Constitution of USA. Judicial review in our constitution has been taken from the Constitution of USA. The Constitution of India borrowed the scheme of Indian Federation from the Constitution of Canada. A scheme of Indian Federation from the Constitution of Canada. Federal system with a strong center has been borrowed by the Indian Constitution from Canada. The idea of including the emergency provision in the Constitution of India has been borrowed from the Weimar Constitution of Germany. Idea of including the emergency provision in the Constitution of India has been borrowed from the Weimar Constitution of Germany. The office of Lokpal and Lokayukt in India is based on which one of the following? Ombudsman in Scandinavia. Ombudsman in Scandinavia. The office of Lokpal and Lokayukt in India is based on which of the following? Ombudsman in Scandinavia. List 1, list 2. Sources, provision of the Constitution. So डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आखिरकार कहाँ से लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया गया है. इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से. यूनियन स्टेट रिलेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से. अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से. मैच करना है फिर से. Indian item in the Indian constitution or country from which it was derived. So India is a United States with great power to the Union, Canada, fundamental right USA, directive principles to Ireland, concurrent list in Union State relation Australia. Which of the following was the biggest source of Constitution of India? Government of India Act 1935. Indian Constitution has taken certain features of the Constitution of its Constitution of the other country. Which country has contributed to the framing of the directive principle of state policy? Ireland. Indian Constitution has taken certain features of the Constitution of other country. Which country has contributed to the framing of directive principle? Ireland. Next question. The preamble say. Of the following words in the preamble of the Constitution of India, which was not inserted through the Constitution? 42nd Amendment Act 1976. Socialist secular integrity. ये सब ऐड किया गया था, डिग्निटी ऐड नहीं किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट द टाइम ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल? लिबर्टी था, इक्वालिटी था, जस्टिस था. सोशलिस्ट नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, तब बाद में इसको ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट के तहत. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूसेस चेंजेस इन द प्रीएम्बल to the Indian Constitution? 42nd Amendment Act 1976. तो 42nd Amendment Act 1976 के तहत प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किया गया है हमारे जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है. फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द केशव नाथा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डिफाइन किया गया है प्रीएम्बल में, वो चेंज नहीं किया जा सकता है. वो था केशव नाथा भारती और स्टेट ऑफ इंडिया केस का. Next question. Which amendment of the Indian Constitution inserted the two words socialist and secular in the preamble? तो 42nd Amendment Act के तहत. Next question है. Preamble of our Constitution read India as sovereign, socialist, secular, democratic republic. Sovereign, socialist, secular, democratic republic.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो प्रीएम्बल में सबसे पहले कौन है उसके तहत हमें अरेंज करना है, तो पहले सॉवरेन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सेकुलर है, फिर डेमोक्रेटिक है। मीन्स 3142 is correct answer. Next question, ideals and objective outlined in preamble of the Indian Constitution have been further elaborated in the chapter on directive principle of state policy, fundamental right and fundamental duties. Next question, which among the following is the correct expression of the term secular in India? सेकुलर का करेक्ट मीनिंग जो है वो है देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया। तो यूपीए बीसीएस में आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया सेकुलर स्टेट? प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये डिस्क्राइब करता है इंडिया सेकुलर स्टेट। Next question, which one of the following liberty is not embodied in the preamble to the Constitution of India? Economic liberty. Which of the following is correct? Socialist, social equality is guaranteed in our constitution. Which one of the following words was not included in the preamble of constitution in the 1975? तो इंटीग्रिटी ऐड नहीं था, बाद में ऐड किया गया। Preamble of Indian Constitution adopted on 26 November 1949 did not include socialist, integrity, secular, republic पहले से था। Consider the following statement about the preamble of the Constitution. तो 1 to 4 इसका करेक्ट आंसर है, तो देख लेते हैं क्या है। The objective resolution proposed by Pandit Nehru ultimately became the preamble. It is not justiciable in nature. It cannot be override the specific provision of the Constitution. What was the exact constitutional status of the Indian Republic on 26 January 1950 when the Constitution was inaugurated? A sovereign democratic republic. The word secularism was inserted in the preamble of Indian Constitution by 42nd Amendment Act. Indian Constitution declares India a secular state. This means that the state regards religious as a private affairs of citizens and does not discriminate on the basis. The preambles to the Constitution declare India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 25वां मिनट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो 5 सेक्शन हम सब सेक्शन इंडियन पॉलिटी कर पाए 25 मिनट में, एक सेक्शन 5 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं, ये ब्रेक का समय है, 4 मिनट बचे हुए, 4.5 मिनट कर लेता हूँ ये सेक्शन। पार्ट्स, आर्टिकल एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेजेस लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पिक आउट ऑफ द वन ऑफ द विच ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट? उर्दू। The item education belongs to the concurrent list. How many schedules to the Constitution of India contains? 12. Which article of the Indian Constitution provides for the institution of Panchayati Raj? Article 40. Article 1 of the Constitution declares India as a union of states. How many articles are there in the Indian Constitution? 395. Although union list, state list and concurrent list cover the entire legislative business, yet there may be an item not mentioned anywhere. Who will legislate on that item? Parliament only. Which part of the Indian Constitution deals with the fundamental right? Part 3rd. Part 4 of the Constitution of India deals with directive principle of state policy. Power, authority and responsible of municipalities are listed in which one of the following schedule of the Constitution of India? 12th. How many languages have recognized by the Constitution? 22. As we all know, child labor is totally banned in India. Article 24. As per the child means a person who has not completed 14 years of his or her age. With what subject to the Article 5 to 11 of the Constitution of India deal? Citizenship. तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बोथ 1 and 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया state that no person can be convicted for any offence except for the violation of law enforced at the time of the commission of the act changes an offence. Next है कि Article 21 of the Constitution of India lays down that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by law. Next question है, the article of the Constitution of India which deal with the directive principle of state policy are 36 to 51. Next question है, Article 3340 of the Constitution of India provides for the appointment of a commission to investigate the socially and educationally backward classes.
Part third of the Constitution of India relates to fundamental rights. The method of constitutional amendment is provided Article 368. Schedule 9th of the Indian Constitution deals with a certain acts and regulation of state legislature dealing with the land reforms and abolition of zamindari. Which one of the following articles of the Constitution of India has provided for the first to proclaim emergency? Article 352. Under which one of the following article of the Constitution of India is the annual financial statement of the economy to be laid by the government on the table of the Parliament before the 31st March every year? Article 112. Which of the following are stated as directive principle of state policy by Article 51 of the Constitution of India? The states shall endeavour to promote international peace and security, maintain just and honourable relations between nations, encourage settlement of international dispute by arbitration. Under which article of the Constitution of India can the President of India be impeached? Article 61. मैच करना है. First schedule the state, 8th schedule languages, 9th schedule validation of certain acts and regulations, 10th schedule provisions as to disqualification by the ground of defection. In which part of the Constitution details of citizenships are mentioned? Second, according to Article 61-64 of the Constitution of India, in 3 states there shall be minister in charge of tribal welfare, who may be in addition to be charge of welfare of the scheduled caste and backward class Punjab. The Virappa Commission in its report on administration reform on the other aspect has suggested doing away with which of the following? Article 310 in India. Which article of the Constitution of India gives precedence to constitutional provision over the laws made by the Union Parliament or State Legislature? 245. Which one of the following provision of Indian Constitution deals with the appointment and dismissal of the Council of Ministers? 75 article. Function to assigned to Panchayat by 73rd Amendment of the Constitution are mentioned in 11th schedule. Which of the following constitutional provision lays down that taxes can neither be levied nor collected without the authority of India? Article 265. Procedures for creation, legislature, legislative council in state have been described in which article of the Constitution? Article 169. मैच करना है. Article 54. Election of President of India. Article 75. Appointment of the Union Prime Minister and Council Minister. Article 155. Appointment of the Governor. Article 164. Appointment of the State Chief Minister and Council of Ministers. The 10th schedule of Indian Constitution deals with the anti-defection legislature. Which article of the Constitution of India deals with the affiliate jurisdiction of Supreme Court in connection with constitutional cases? Article 132. Read with Article 134A. The Constitution of India does not clearly provide for the freedom of press, but this freedom is implicit in the 19th subclause 1A. For distribution of power between the Union and the state, the Constitution of India introduced 3 lists which 2 of the following articles govern the distribution of power: Article 245 and 246.